Hello everyone, this question appears in Class 7th NCERT Chapter of Perimeter and Area. This is fourth question of its exercise 11.4. So the question says that a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 long and 4 meter wide. Find the area of veranda and the costs of cementing the floor of veranda at the rate of rupees 200 per meter square. So हमारे पास एक रूम है जिसके हमें गिवन है डायमेंशन है इसकी 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड देन 2.25 मीटर width of veranda constructed all along outside. So यहाँ पर हमारे पास एक और ये हो जाएगा हमारा वरांदा जो कि 2.25 मीटर वाइड है. सो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 इज इक्वल टू 4.5. सो 4.5 प्लस 5.5 ये हो जाएगी 10 मीटर एंड 4 प्लस 4.5 4 प्लस हो जाएगा 8.5 मीटर. सो हमें एरिया ऑफ वरांदा फाइंड आउट करना है. मींस इन दोनों रेक्टेंगल के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है. मींस एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ room is equal to L into P is equal to 5.5 into 4 is equal to 22 meter square. Then area of room with veranda is equal to L into P and length and width हमने फाइंड आउट कर लिए 10 and 8.5. 10 into 8.5 is equal to 85 meter square. So area of veranda is equal to 85 minus 22 is equal to 63 meter square. So first part एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है. सेकेंड पार्ट इज कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर. सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर फॉर 1 मीटर स्क्वायर ये हमें गिवन है 200 रुपीज एंड हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग floor for 63 meter square is equal to 63 into 200. So ये जाएगा हमारे पास rupees 12,600 rupees. So area of veranda is 63 meter square and cost of cementing the floor is 12,600 rupees. Thank you.